Good evening, everybody. Today we will discuss about the Faraday's first law and second law. Faraday's first law states that whenever there is a change in flux, there is induced EMF produced in it. Second law states that the greater Faraday's second law, the greater will be a change in the flux, the greater will be the induced current produced in it. Now, what is magnetic flux? Magnetic flux is the magnetic lines that's crossing per unit area. For example, you can see in a pictorial form. Here you can see that these are the lines and these are the coil, and associated with it here is a galvanometer which show that there is any change in the induced current. So when the number of magnetic lines that is passing through it area, this you can say as magnet. If you change the position, that means this one, just like the magnetic flux greater pass through it, and again you can reach to the back to the same position. So there is a change in the flux, change in that is the magnetic lines. These are the imaginary lines which is coming from the magnet, and these are called the magnet lines. The line per unit area means this area through number of line passing, that's called the magnetic flux. So the first law states that if there is change in the flux, that is change in the flux, the induced current is produced in it. Second law states that the greater will be change in the flux, that means the greater will that you will change the position of the magnet or the coil, and there is a or both you can change the position, and that's change the magnetic flux that produce the greater will be the induced magnetic flux, then the greater will be the induced current produced. Now the Hindi version of magnetic flux we called as, ये एक पर्टिकुलर एरिया है. सपोज अगर मैं एरिया लेता हूँ और उसमें से मैग्नेट लाइन जितनी निकलनी, मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं, मैग्नेट से जितनी लाइंस निकलती हैं उसे मैग्नेटिक लाइंस कहा जाता है. जैसे मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा. यहाँ आप देखेंगे जो इमेजिनरी लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस है जो दिखाई नहीं देती, ये इसे पास करेंगी. और ये एक कॉइल है, इससे गैल्वेनोमीटर लगा. गैल्वेनोमीटर की कंडीशन ये होती है कि ये डिटेक्ट करता है चार्ज. तो जितनी चार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. और जब इसकी पोजीशन चेंज होगी तो इससे आपका करंट प्रोड्यूस होगा. अगर आप पहला लॉ ये बोलता है कि जब इसमें फ्लक्स होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना जैसे ये पोजीशन है, एक पोजीशन में देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो है कम पास हो रही, दूसरे वाले में ज़्यादा पास हो रही. अगर ये बार बार पोजीशन चेंज करते रहेंगे मैग्नेट की या कॉइल की, ये कॉइल है जिस कॉइल की या दोनों के अगर चेंज करें तो उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. ये फैराडे सेकेंड लॉ कहता है. इसमें ये बात ध्यान देने की है कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो करंट प्रोड्यूस होता है, इससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. ये लॉ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते. जैसे कि ये जनरेटर में रहता है, डायनामो में रहता है, यानी हम मैकेनिकल एनर्जी से जब हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें कैसे चेंज करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है और उसके अंदर कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and share and like it so that you get the good videos of physics in Hindi English. Thank you.